So, should we start? Thank you very much, media persons. We had sought an appointment with the chairman of Rajya Sabha, Shri Venkaiah Naidu ji, about a week back. I would repeat, 1 week back. But since the Honorable Chairman of Rajya Sabha was touring the northeastern states of our country, as a result of which we could not meet him a week before, and today was the time given by his office. We, the political parties, on behalf of 7 political parties in Rajya Sabha who have signed the motion, and also on behalf of the ones who have not signed the motion, we met Honorable Chairman at his residence today at 12 noon. We were with him for about 40 minutes. So we have moved a motion for impeachment for the removal of Chief Justice of India under 5 listed grounds of misbehavior. We have sought his removal under Article 217, read with Article 124, bracket 4 of the Constitution of India. So, while submitting this motion to Honorable Chairman, we did not discuss the merits. We just requested him that this is our motion, and the number required for the motion to entertain and under the Constitution of India, the number required for the chairman to take action or to entertain the motion has to be minimum 50 members. So we have submitted a motion signed by 71 members of the Parliament, but we have also given him in writing that there are 7 signatures of honorable members who are meanwhile retired. So we have said in the letter that those 7 members should not be counted out of the 71 members. So I am sure that the minimum requirement, more than the minimum requirement to entertain the motion, that much number we have submitted, and we are very much sure that Honorable Chairman will take action, and we expect, of course, as positive action, as all the opposition parties are expecting that. Now, about the details, about the 5 points which I have mentioned are the grounds of misbehavior, I would request Mr. Kapil Sibalji
to mention in detail. You can come to my place. Yeah. आप इधर आओ. मैं बोल दूँ. Now I have said that he will give the details. The questions you can ask Mr. Kapil Sibal. जैसे गुलाम नबी जी ने कहा कि आज हम 12 बजे उपराष्ट्रपति जी से मिले और जो चेयरमैन है राज्यसभा के, और उनको हमने एक मोशन फॉर इम्पीचमेंट प्रस्तुत किया. संविधान के अंतर्गत अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज संविधान के अंतर्गत मिसबिहेव करता है, फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर, उसको पार्लियामेंट की अनुमति से इंक्वायरी होने के बाद उसको रिमूव कर सकते हैं. तो ये मोशन हमने राष्ट्रपति जी को दिया और जैसे गुलाम नबी जी ने कहा कि 40 मिनट वार्तालाप हुई, लेकिन हमने कोई मेरिट की बात उनके साथ नहीं की. अब देश जरूर जानना चाहेगा कि हमने क्यों ये कदम उठाया, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश को विस्तार से बताएं कि ये कदम हमने क्यों उठाया. तो आप हमें थोड़ा सा वक्त देंगे. पहले मैं अंग्रेजी में, क्योंकि लिखित जो मैं पढ़ूंगा आपके सामने, वो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी भावना क्या है और ये कदम क्यों हमें उठाना पड़ा. We wish this day had never come. In the framework of our constitutional fabric, the judiciary holds a very special place. Its independence is a constitutional imperative without which democracy will flounder. It must guard and protect itself from external interference and must be above suspicion. This is why judges must uphold the highest standards of integrity. They must also be tested by the same standards. In the scheme of things, within the judicial setup, the office of the Chief Justice is an exalted position. He is one among equals on the judicial side, but has vast powers on the administrative side. Since Chief Justice Deepak Mishra was appointed to the high office, there have been situations when questions have been raised about the manner in which he has dealt with certain cases and taken certain administrative decisions. There have been internal rumblings resulting in open discord amongst judges in the Supreme Court. This manifested itself when 4 senior-most judges held a press conference on January 12, 2018, where they publicly expressed their disquiet about the manner in which the Chief Justice was exercising his powers. In this context, they circulated a letter to the press that they had addressed to the Chief Justice. In the letter, and this is important, one of the concerns expressed by the judges was about attempts to unsettle through a judicial order the memorandum of procedure which stood settled. The judges stated that for some time the administration of the Supreme Court has not been in order, and many things which are less than desirable have been happening. ये हम नहीं कह रहे, ये न्यायाधीश कह रहे हैं, कोर्ट जजेस कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं.
They said that time and again, as senior members of the court holding a responsibility to this country, they tried to collectively persuade the Chief Justice that certain things are not in order and that he must take remedial measures. They lamented that their efforts had failed, and all four of them were convinced that unless the institution is preserved, democracy will not survive in this country. When asked, they expressed dissatisfaction at the manner in which late Judge Loya's case was being dealt with at the time. We were hoping that the anguish of the judges, as reflected in their statements to the press, would be addressed by the Chief Justice, and the Chief Justice in response would set his house in order. More than 3 months have passed. Nothing has changed. Recent communications of 2 senior judges to the Chief Justice reveal that the Chief Justice has not asserted the independence of the judiciary in the face of interference by the executive. When the judges of the Supreme Court themselves believe that the judiciary's independence is under threat and democracy in peril, alluding to the functioning of the office of the Chief Justice of India, should the nation stand still and do nothing? Should the people of this country allow the institution to diminish and not protect it both from within and without? That is what we were confronted with when contemplating action to ensure the independence of the institution that protects the rights of citizens and is the arbiter of the fate of the democracy that we cherish. The choice was not easy, because either way, the repercussions are serious. The Constitution allows only one recourse to remedy the situation. Since there is no other way to protect the institution except to move an impeachment motion, we members of the Rajya Sabha do so with a very heavy heart. We took upon ourselves to move the impeachment motion in the background set out above, but on the basis of charges of acts of misbehavior that are set out in the impeachment motion. We do not wish to repeat those charges here in detail. We only wish to state that anyone occupying the office of the Chief Justice of India must be judged on the basis of the highest standards of integrity. The charges as stated suggest conduct unbecoming of a person holding the office of the Chief Justice of India. The first charge relates to the conspiracy to pay illegal gratifications by persons in relation to the Prasad Education Trust case and the manner in which the case was dealt with by the Chief Justice. It is on record that the CBI registered an FIR. There are several recorded conversations between middlemen, including a retired judge of the Odisha High Court, excerpts of transcripts of which are set out in the articles of charge. References to the Chief Justice by innuendo in these conversations are evident. The denial of permission to the CBI to register an FIR against Justice Narayan Shukla of the Allahabad High Court, when the CBI shared incriminating information with the Chief Justice, was itself an act of misbehavior. All this requires a thorough investigation. The second charge relates to the Chief Justice
having dealt on the administrative as well as the judicial side with a writ petition which sought an investigation into the matter of Prasad Education Trust, in which he too was likely to fall within the scope of investigation. The practice in the Supreme Court is that when the Chief Justice is in a constitution bench, the matters are to be listed, and matters are to be listed. Requests for listing are made before the first puisne judge. This is an age-old practice. On November 9, 2017, when a writ petition was mentioned before Justice Chalmeshwar at 10:30 a.m., since the Chief Justice was sitting in a constitution bench, the same was directed to be listed later the same day. When the matter was taken up, a note dated November 6, 2017 was placed before the judges hearing the matter by an official of the registry. This is the basis of the third charge, alleging that the note of 6th November brought to the attention of Justice Chalmeshwar on 9th November, as the matter was taken up, was antedated. The charge of antedating is by all accounts very serious. The fourth charge relates to the Chief Justice having acquired land when he was an advocate by giving an affidavit which was found to be false. Further, despite the orders of the ADM cancelling the allotment in 1985, the Chief Justice surrendered the land only in 2012 after he was elevated to the Supreme Court. The fifth charge relates to the abuse of exercise of power by the Chief Justice in choosing to send sensitive matters to particular benches by misusing his authority as master of the roster with the likely intent to influence the outcome. As representatives of the people, we're entitled to hold the Chief Justice accountable, just as we are accountable to the people. The majesty of the law is more important than the majesty of any office. We hope that a thorough inquiry will be held so that truth alone triumphs. Democracy can thrive only when our judiciary stands firm, independent of the executive, and discharges its constitutional functions honestly, fearlessly, and with an even hand. अब मैं संक्षेप में हिंदी में आपको बता दूं कि मूल बातें जो मैंने आज आपको बताई हैं अंग्रेजी में वो क्या हैं। आज हम यहां बैठे खुश नहीं हैं कि आज आपके सामने हम आए हैं और हम आरोप लगाने आए हैं कि संविधान के अंतर्गत जो चीफ जस्टिस का जो पद है, जो मर्यादा उस पद की होनी चाहिए, उस पद की मर्यादा का चीफ जस्टिस ने उल्लंघन किया है। इस देश में या किसी भी देश में कोई भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो, उसका एक अपना अहम ओहदा होता है और उस ओहदे की हम इज्जत करते हैं, लेकिन उस ओहदे की चीफ जस्टिस साहब को भी इज्जत करनी चाहिए। और हमें ऐसा लगा, और हम ये बात नहीं कह रहे, न्यायाधीशों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद पब्लिक में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बातें देश के सामने रखी और कहा कि अगर चीफ जस्टिस साहब का ऐसा ही रवैया रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा
देश को अवगत कराकर कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई प्रयास किए, चीफ जस्टिस के साथ बातचीत की और कहा कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है एक बार तय हो चुका है, उसके साथ उसको बदलने की प्रयास हो रहा है और ये जुडिशरी की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने ये भी और कहा कि कई और वैसी बातें हैं जिनके बारे में उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ बातचीत की और प्रयास किया कि किसी तरीके से इन बातों पे गौर हो और इसका कुछ समाधान हो। लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो निराश रहे, प्रयासों करने के बाद उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। हम चाहते थे, और ये बात आपको मालूम है कि जनवरी 12, 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने पब्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम तब चुप रहे क्योंकि हमें ये विश्वास था कि चीफ जस्टिस साहब उन बातों को पे गौर करेंगे और कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, आज हम अप्रैल में हैं और कोई समाधान हुआ नहीं। तो चिंता की बात है क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जिसकी स्वतंत्रता पे कोई आंच नहीं आना चाहिए, अगर वो खतरे में आ जाए तो देश खतरे में आ जाएगा और लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है? या तो हम बैठे रहें और गिरावट देखते रहें ताकि जुडिशरी इस स्तर तक पहुंच जाए कि अब फिर उसको उठाना मुश्किल होगा। एक ये भी रास्ता है कि हम चुप रहते, लेकिन हमने संविधान के प्रति ओथ ली है और वो ओथ क्या है कि अगर संविधान का कोई भी ढांचा खतरे में आ जाए तो उसकी रक्षा करना हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक कर्तव्य है। आज हम वो कर्तव्य निभाने जा रहे हैं, हालांकि उस कर्तव्य निभाने में हमें कोई खुशी नहीं हो रही। हम कोई दिल से खुश नहीं है कि हमें यह कदम उठाना पड़ा, लेकिन क्या करें? संविधान प्रमुख है, कोई भी पद हो वो संविधान के अधीन है और हमें संविधान की रक्षा करनी है। इस प्रस्ताव में जो हमने उपराष्ट्रपति जी को दिया, जो चेयरमैन है, उसमें हमने 5 आर्टिकल्स ऑफ चार्ज दिए हैं, 5 आरोप लगाए हैं और लगभग मैं और उन बातों को ऑलरेडी कह चुका हूं, तो मैं उसमें दोबारा विस्तार से नहीं जाऊंगा। नहीं, 5 आरोप हमने लगाए हैं जिससे साफ तय हो जाता है कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। एंड दिस अमाउंट्स टू मिसबिहेवियर, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड मिसबिहेवियर, नॉट करप्शन। तो अगर चीफ जस्टिस साहब या कोई भी जज अपने पद का दुरुपयोग करे एंड दैट अमाउंट्स टू मिसबिहेवियर, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको आगे ले जाएं। कुछ बातें हमने जो उस प्रस्ताव में रखी हैं, उस इंपीचमेंट मोशन में रखी हैं, उसमें कई टैप्ड कॉन्वर्सेशंस भी हैं जो सीबीआई के पास थी और उसमें लिखित भी हैं, जिसमें एक रिटायर्ड जज उड़ीसा हाई कोर्ट का और बाकी जो मिडलमैन हैं, बिचौले हैं, वो लेन देन की बात कर रहे हैं और संकेत और कुछ बात नॉट डायरेक्टली चीफ जस्टिस के ऊपर भी उन्होंने कही है।
तो ये बहुत ही गंभीर मामले हैं। और इसके अंतर्गत आपको ये भी बता दूं कि जब सीबीआई चीफ जस्टिस साहब के पास गई कि हमारे पास सबूत है, एक जज शुक्ला साहब हैं जो सिटिंग जज थे, कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारे पास सबूत है, तो चीफ जस्टिस साहब ने वो सैंक्शन नहीं दी। क्यों नहीं दी, किस वजह से नहीं दी? जब सीबीआई के पास सबूत थे, ये भी अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और साथ साथ में चीफ जस्टिस साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे और जुडिशियल साइड पे ही उसी मामले के फैसले किए, तो वो भी अपने आप में गंभीर बात है। और साथ में जब चलमेश्वर साहब एक याचिका सुन रहे थे, जबकि चीफ जस्टिस साहब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर बैठे हुए थे, और जो कन्वेंशन है कोर्ट का वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चल रहा हो तो फर्स्ट प्यूनी कोर्ट पे याचिका जा सकती है। तो जब चलमेश्वर साहब ने वो याचिका ली और कहा कि इसको हम बाद में दिन में सुनेंगे, तो तुरंत सुनने के पहले और जैसे ही सुनवाई होने लगी, एक नोट आ गया चीफ जस्टिस साहब से, और ये याचिका 9 तारीख नवंबर को सुनवाई होनी थी 2017 को, कि नोट आ गया कि ये 6 नवंबर का नोट आ गया कि आप याचिका नहीं सुनिए, कोई और बेंच सुनेगा और हम ही इसको देखेंगे। तो एक बैकडेटिंग में उन्होंने एक 6 नवंबर नोट को आरोप यह है कि बैकडेट किया गया, ये भी एक आरोप है। और दूसरा उन्होंने एक हल्फिया बयान एफिडेविट फाइल किया था जब वो वकालत कर रहे थे किसी जमीन के बारे में, और एक फॉल्स एफिडेविट, झूठा एफिडेविट फाइल किया था, और जो एडीएम ने फैसला दे दिया कि वो झूठा एफिडेविट था। और हालांकि 1985 में उस अलॉटमेंट को रद्द किया गया, लेकिन 2012 तक जस्टिस मिश्रा ने उस लैंड को सरेंडर नहीं किया, वापस नहीं किया। तब किया जब वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। तो ये भी अपने आप में एक गंभीर चार्ज है। और जिस तरह से उन्होंने कुछ संगीन केस, कुछ सेंसिटिव केस किसी जज के आगे लगाए, कुछ जजों के आगे लगाए, उसमें भी हमने उदाहरण दिए हैं, जिसके अंतर्गत हमने कहा है कि ये भी एक दुरुपयोग है अपने पद का। तो हम इतना ही कहेंगे कि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए और संविधान की रक्षा होनी चाहिए। और आज हम इस तरफ इसीलिए बैठे हैं कि रक्षा हो, और हमें विश्वास है कि रक्षा होगी। धन्यवाद। Can I say one thing, please? If everybody asks, we will not be able to take questions. Please permit me to guide this. Arun Singh ji. सर, किन लोगों ने आपका समर्थन किया, किन लोगों ने साइन किया है? देखो, 71 लोगों ने साइन किया है और उसमें 7 राजनीतिक दल शामिल हैं, और नाम हम नहीं बताएंगे। और 71 लोगों में से 64 लोग हैं जो आज के दिन मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। Let's not make this a fish How long do you expect the chairman to settle this petition? Sorry? How long do you expect the chairman to decide on this petition? Well, that's for the chairman to decide, not for us. Sir, Mr. Sibal, my point is very simple. Mr. Azad in his opening remarks said that he had got 1 week's time. Today, 1 week before. The entire nation believes that this is a repercussion of the opposition using this tool against Justice Deepak Mishra and the Supreme Court to traumatize them against the independence and to send a message that you are doing this because they gave a Justice Loya verdict. Can you clarify that this is not in the context of what has happened vis-a-vis the Justice Loya verdict? ये तो I have categorically said this, that we sought this appointment about a week back, and you can verify from the chairman's office. When Nothing to do with it is nothing. When we sought an appointment week back, had the chairman been here that day or maybe next day or the following day, we would have met him 1 week before, Not or only 6 days before, 5 days before. Not only that, the articles of charge don't have any reference to Justice Loya.
So why would you say that it is? And you can also see the signatures were collected when the parliament was in session. That's right. So that's all. The signatures when much before the the members of parliament retired. So when was this initiated? You can imagine. And the initiation of this whole process started about 20 days back, maybe even 1 month back. And date of signature is also, date of signature by MPs is also there. You know, I have already said there are parties who have signed, there are parties who have not signed or were not available, but are supporting this. I will answer that. Remember, the impeachment motion is not to be moved by parties. Please remember that. Allow me, sir, allow me. You remember that. It's not to be moved by parties. 50 members of parliament in their individual capacity, they may belong to different parties. If they choose to move the motion, that's a valid motion. So don't make this political. This is something that is in relation to the independence of an institution. It has no political motivation behind it. मोहित दुबे सर, मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आप लोग न्यायपालिका में राजनीति को घुसड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उपसभापति वेंकैया नायडू साहब ने इसको खारिज कर दिया, स्वीकार नहीं किया, तो रास्ते क्या बनते हैं आगे? रास्ते उस समय अगर ऐसा सिचुएशन आएगी तो हम भी आपको रास्ता बता देंगे। संविधान में बड़े रास्ते हैं। अभी क्या बोला? कुछ नहीं, कोई इस मेरिट्स पे कोई बात ही नहीं हुई, ना हमने जिक्र किया ना उन्होंने किया। 40 मिनट तो हम पार्लियामेंट की बातें करते रहे। Can you spell out why is there a consensus or no? No, there is. Why do you say there is none? There is consensus. There is consensus. There is consensus. From economic times. Sir, you have to wait for your turn. According to the, You will not be able to run this case here. can the chairman suo moto decide the merit of the petition, or should he set up a committee? See, there is just let me ask the first question. There is what is called the Judges Inquiry Act. Under that act, the chairman, in consultation with whoever he likes to consult, may, after that consultation, either admit the motion or reject the motion. That discretion he has. So we will await what the chairman will do. Second question. No second question. No second question. From India, please. Two-thirds का जो आंकड़ा है 162 का, वो आप कैसे लेकर आएंगे? लिमिटेड नंबर ऑफ सांसद आप कह रहे हैं। और अभी चर्चा कहाँ हुई? नहीं, अभी दो बातें मैं आपसे इस बात में कहूँ कि आप ये सवाल है, ये पॉलिटिकल सवाल है। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर कोई मुद्दई क्लाइंट सोचे कि उसके साथ या किसी के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, वो केस जीता भी जा सकता है और हारा भी जा सकता है, लेकिन जो लड़ाई होती है वो न्याय के लिए होती है। सर, मैं आपसे ये सवाल जो आपने भी आंसर दिया था यहाँ बैठते फॉलोअप है, आपने कहा कि चेयरमैन का डिस्क्रिप्शन है, वो जिन लोगों से सलाह मशवरा करें उसके बाद फैसला कर सकते हैं। लेकिन आपने जो 6 सांसदों के दस्तखत कराए वो रिटायर हो चुके हैं, आपको लगता नहीं ये एक आधार रिजेक्शन का बनता है? हमने लिख के दे दिया, हमने लिख के दे दिया, इनको काउंट मत किया जाए, चेयरमैन को लिख के दे दिया। रमन न्यूज़ 24। सर, सिब्बल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि राज्यसभा के चेयरमैन को क्या ये अधिकार होता है कि अगर आपके पास मौजूदा 50 सांसदों की दरकार है राज्यसभा में और आपने 50 से ज्यादा सांसदों के सिग्नेचर करके दिए हैं, क्या अपने विवेक से इस मोशन को वो रिजेक्ट ही कर सकते हैं? एक मिनट सर, इसी से दूसरा सवाल है कि अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो चीफ जस्टिस के ऊपर तुरंत क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? पहली बात तो ये कि मैं समझता हूं कि जिस किस्म के आरोप मैंने आपके सामने रखे हैं और मैंने पढ़ के भी आपको बताए हैं, मैं नहीं समझता कि ऐसे आरोपों को आप नजरअंदाज कर सकते हो। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं दूसरों की राय की बात नहीं बता रहा। लेकिन अगर जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा
क्या था वो कि हाँ, तो जो कन्वेंशन रही है और रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी को लेकर आज तक चली आ रही है कि जब जब भी ऐसे आरोप किसी न्यायाधीश, हाईकोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज पे लगे हैं तो ही हैज टू रिफ्रेन फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज जुडिशियल फंक्शंस। ये कन्वेंशन रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कन्वेंशन को तोड़ा नहीं जाएगा, उल्लंघन नहीं होगा। हाँ, मौसमी। No, sir. First, Sandeep, we have put them in a particular line. Sir, there are reports that the Congress itself was divided. Former Prime Minister Manmohan Singh apparently has not signed. We did not want to involve. No problem. Sir, Are these reports true? they are absolutely false. They are not true at all. From the very beginning, remember, this is a very serious issue. मैंने आपको बात अंग्रेजी में भी बताई और हिंदी में बताई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैंने उस दिन एक उदाहरण लिया था कि अब ये कॉफी पीने की बात नहीं है, इट्स नॉट इंस्टेंट कॉफी। ये गंभीरता के साथ, सोच समझ के साथ कोई भी अगर निर्णय लेता है तो बड़ी गंभीरता के साथ, क्योंकि एक संविधान की बात हो रही है और एक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। हमने जान के डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन्वॉल्व नहीं किया, खुद नहीं किया, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और जहां तक कुछ और लोगों का सवाल है, हम नहीं चाहते थे कि कुछ लोगों के मैटर्स चल रहे हैं, हम नहीं चाहते थे कि उनको एम्बैरेस किया। आपके जो 5 आरोप है उसमें जस्टिस लोया पर जो फैसला आया न्यायपालिका का उसका मेंशन नहीं है, तो क्या कांग्रेस की शिकायत, आपकी पार्टी की शिकायत उसको लेके है? और जो शोराबुद्दीन केस की हैंडलिंग थी न्यायपालिका की उसका भी मेंशन आरोपों में नहीं है, तो क्या उस पर क्या? देखिए आप देखिए, संविधान के अंतर्गत इट इज ओनली मिसबिहेवियर अगेंस्ट विच वी कैन मूव। कोई जुडिशियल वर्डिक्ट आता है, चाहे वो लोया केस का हो, चाहे सोराबुद्दीन केस का हो, वो जुडिशियल मिसबिहेवियर तो हो नहीं सकता ना। वो तो एक एक फैसला है, कानून के अंतर्गत हुआ है, तो वो तो कभी चार्जेस में आ ही नहीं सकता। हम उससे इत्तेफाक रखें वो अलग बात है, हम कहें वो फैसला सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन वो इस आर्टिकल ऑफ चार्ज में नहीं आ सकता। One of the charges pertains to the manner in which cases were referred to different benches in attempts to influence the outcomes. Can you explain those cases? No, I don't think that that's a matter for the inquiry. We have done it. We have referred to those cases in the motion. Does that include the case related to the Ram Temple case? No. सर, मेरा सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट में PIL निकाली गई है जिसमें ये मांग की गई है कि इम्पीचमेंट को लेकर के मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो। CJI ने अटॉर्नी जनरल से राय मांगी है इसको लेकर। आपसे भी मांग लेते तो अच्छा रहता, लेकिन सर इस तरह क्योंकि आप संविधान की रक्षा करते हो और अगर आपके मुंह बंद किए जाएं तो वो संविधान का उल्लंघन होगा। मीडिया रिपोर्ट आपको लगता है मैंने अपनी राय बता दी आपको। Despite having enough numbers in Lok Sabha, you were allowed to move a motion of no confidence in Lok Sabha because stay was not in favor. Do you think, and the motion also was in order, but do you think it's the situation is that? You seem to know better than more than us. We have no idea about what you're saying. Sir, total TV. सर आजाद साहब, ये पूरी प्रक्रिया जो है पिछले 6 से 2 मिनट की बजट सत्र के दौरान क्या ये जो महाभियोग लाने की प्रक्रिया थी बजट सत्र के दौरान आपने शुरू की थी, साइन सिग्नेचर और माजिद मेनन ने सबसे पहले बयान दिया था। क्या वजह थी कि इतना सस्पेंस बना इसको लेकर? और दूसरा ये कि क्या इसको लेकर सहमति नहीं थी राजनीतिक दलों के बीच, खुद पार्टी के अंदर आपकी इस पर विरोध था? सहमति और सहमति का सवाल ही नहीं था, सहमति शुरू से ही थी। लेकिन जैसे कपिल सिब्बल जी ने कहा कि बहुत गंभीर विषय था, ये ऐसा नहीं है कि किसी मामूली आदमी, तो इसमें सोच विचार जरूरी था। One second, sir. सर मेरा सवाल ये है कि आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 जनों के लेटर का भी सब्जेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जज के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मेरा सवाल है, पहले आप लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का मसला कोर्ट ही आपस में निपटाए, वो ज्यादा सही रहेगा। अब आप 4 जजों के मामले को लेकर आप इतने प्रस्ताव भी लाए हैं, आपको नहीं लगता कि आप
जजों को लेकर अपने राजनीतिक इसका मैं जिसका जवाब देना चाहता हूं कि हम भी चाहते थे कि वो जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, वो निपट जाएं जुडिशरी के अंदर ही, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 जनवरी को हुई और मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनवरी का इंतजार रहा, फरवरी का रहा, मार्च का रहा, अब जब निपट नहीं रहे तो All right, shocking news coming in on the opposition there. The opposition once again going and talking about the same issues to take on the impeachment motion here. This time they say that we've met the vice president. So why Congress has suppressed the facts for number? Sir, this is press conference is on the impeachment motion. Please ask only questions relating to the impeachment. Thank you so much. So you have already asked the question. Justice K. Joseph and Indu Malhotra's case still holds ground. You have very categorically referred to the judges, Sarmeshwar and Puneer, who have written about a full court bench. Congress party has asked for a full court bench. Does the Congress party still believe that a full bench of the Supreme Court sit and advocate on this entire matter? That's a request made by judges of the Supreme Court to the Chief Justice. Let the Chief Justice consider it and let the judges resolve it. And what about the... Thank you.